to be very clear with that. How to bring reading skills. Reading skills. So one clear fact is one can make one's reading skills better only if one involves into reading. ये फैक्ट है. आपको अगर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो रीडिंग करके ही आप इंप्रूव कर सकते हैं. देयर इज नो अदर मेथड, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है. सो जिनका हैबिट नहीं है रीडिंग का, उनको थोड़ा सा अपने हैबिट डेवलपमेंट में सुधार करना है. और हम बात कर रहे हैं कि रीडिंग बेहतर कैसे करें. ठीक है. इसकी ट्रिक्स क्या है, इसके हैक्स क्या हैं. सबसे पहला पॉइंट है, देखिए आपकी रीडिंग में कंटेंट कुछ इस तरह से होता है: हेडिंग, सब हेडिंग एंड कंटेक्स्ट. सो हमेशा ध्यान रखिए, जो हेडिंग है वो हेडिंग जैसी लगे. ठीक है. हेडिंग शुड बी स्पोकन विद मोर विद एनर्जेटिक टेम्पो ऑफ वॉइस. एनर्जेटिक टेम्पो ऑफ वॉइस का मतलब है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो हेडिंग में थोड़ा ज्यादा हो. जो आपका वॉइस का टेम्पो है वो हेडिंग में थोड़ा ज्यादा हो, उससे लगेगा कि ये हेडिंग है. क्लियर? राइट. एंड सब हेडिंग ठीक उसी तरीके से इसका पर्पस ही होता है टू डिफाइन द जिस्ट ऑफ हेडिंग. तो आपका वॉइस टेम्पो उसी तरह से वेरी करेगा. वॉइस मॉड्यूलेशन विल वेरी एज पर सब हेडिंग. तो चूंकि सब हेडिंग आ ही रही है हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, तो आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होगा वो सब हेडिंग में थोड़ा सा स्लो होगा और हेडिंग में थोड़ा सा फास्ट होगा. ठीक है, लाउड होगा. और अब बात आती है कंटेक्स्ट की. ठीक है. कंटेक्स्ट में देखिए मेन बात क्या है, जो पैसेज है कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो पंक्चुएशन. आप अगर पंक्चुएशन को फॉलो करके पढ़ रहे हैं तो आपका कंटेक्स्ट बहुत ही स्मूथ होगा, और अगर आप पंक्चुएशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. राइट. पंक्चुएशन का मतलब है कि जहां पे फुल स्टॉप आ रहा है वहां पे एटलीस्ट फील हो कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. जहां पे कॉमा आ रहा है वहां पे थोड़ा सा फील हो कि उसके बारे में थोड़ा और बताया जा रहा है. जहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, वो फील होना चाहिए कि देयर इज अ पॉज, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. For your kind information, these are your necessary pauses. These are necessary pauses. ये सभी हमारे necessary pauses हैं. इनका आना हमारी लैंग्वेज में बेहतरीन टच देता है. अगर ये नहीं होंगे तो लैंग्वेज थोड़ा ऑड लगेगी. तो ये होने चाहिए. इसके साथ साथ the energy level in a sentence should be from high to low. अब पता चला आपने सेंटेंस लास्ट में जो वर्ड है उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया तो वो ऑड लगेगा. सेंटेंस की शुरुआत फ्रेश एनर्जी से हो, फिर लास्ट में आप एनर्जी लेवल को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो फिर से फ्रेश एनर्जी से शुरू कर सकते हैं. बात समझ में आ रही? And important point is have a movable eye over the lines of the passage. जो आपके पैसेज की लाइंस हैं उन पे मूवेबल आई रखिए. मूवेबल का मतलब है ऐसे मूव करता हुआ. हो सकता है कोई वर्ड बीच में बहुत टफ मिल जाए, जैसे प्रोनाउंस करने में आपको टाइम लग रहा है, उस केस में
आप अपनी एक आर्ट डेवलप करिए कि उस वर्ड की वजह से आपको ओवरऑल जो रीड करने का एबिलिटी है वो अफेक्टेड ना हो, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी रीडिंग को बेहतर बनाते हैं। एंड लॉन्ग सेंटेंस है, इफ देयर इज अ लॉन्ग सेंटेंस you may have a pause in between, but it shouldn't come in one's habit. देखिए, अगर आप पूरे पैसेज में एक दो जगह थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे रुकेंगे तो वो ऑड नहीं लगेगा, बट वो हैबिट में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप हर दो वर्ड के बाद रुक रहे हैं तो वो ऑड लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए, और बाकी रीडिंग जितना आप करते रहेंगे उतना ही आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होता रहेगा, द मोर यू रीड। एंड pronunciation is the beauty of your language. Pronunciation is the beauty of your language. So pronounce words as per their actual pronunciation. देखिए, ना इसमें ज़्यादा स्टाइल मारिए और ना ही उनको बहुत ही लो लेवल पे प्रोनाउंस करिए। जैसा उनका नेचर है वर्ड का वैसा आप उनको उच्चारण दीजिए। हैव प्रॉपर माउथ ओपनिंग टू लेट वर्ड्स अटर क्लियरली। वर्ड्स को बाइट मत करिए, वर्ड्स को प्रॉपर माउथ ओपनिंग दीजिए, से वर्ड्स क्लियरली आप उन्हें बोलें। जितना स्पष्ट आपका उच्चारण होगा उतना ही बेहतरीन आपका रीडिंग का एक्सपीरियंस होगा। तो क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, और क्लैरिटी आती है लाउड वॉइस से। स्पीक अ बिट लाउडर एज कंपेयर टू नेटिव लैंग्वेज इफ यू आर रीडिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा उसको लाउड पढ़ें एज कंपेयर टू योर नॉर्मल बेस। जैसे आपका नॉर्मल बेस हिंदी में जो भी रहता है उस बेस से थोड़ा बढ़ा दीजिए, और पहले ही बढ़ा दीजिए, तो जो आपका ऑडिबिलिटी पार्ट है वो बेहतरीन होगा अगर आप अपने बेस को थोड़ा, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा करके चले पहले से ही। एनी क्वेश्चन? कैन वी हैव बेटर एक्सपीरियंस इन द रीडिंग नाउ? अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो जो अभी आपने एक्सपीरियंस लिया उसका आप रीडिंग एक्सपीरियंस बेटर ले सकते हैं। हाँ, और miracles don't happen, miracles happen but they don't happen in a very short time. तो गिव टाइम टू इट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं। मे बी आज आपने एक पैसेज बहुत अच्छा पढ़ लिया, मे बी हो सकता है कल ना पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि कल वाला पैसेज हो सकता है बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चला गया है। एक ये भी बात होती है कि हमें क्या भाता है। जैसे किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसका वो कंटेक्स्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन है ये मुझे नहीं ज्यादा मतलब है, उसको स्पोर्ट्स सेक्शन ज्यादा पसंद है तो स्पोर्ट्स सेक्शन ज्यादा अच्छा रीड करेगा। तो रीडिंग एबिलिटी में आपका इंटरेस्ट भी मायने रखता है। तो इसका एक ही तरीका है, द मोर यू रीड द मोर स्किल्स यू एक्वायर। हाँ, रीडिंग अगर कोई चेक कर रहा है किसी कैंडिडेट के तो उसके चेक करने के जो पॉइंट्स है वो यही है कि पंक्चुएशन सही हो, वॉइस क्लैरिटी सही हो, वॉइस का टेम्पो सही हो, हेडिंग जैसी लगे, सब हेडिंग जैसी लगे, कंटेक्स्ट एक फ्लो में चला जा रहा है। कोई अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा कैसे करे उसके तरीके यही है। टेक न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग अलाउड, तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दें। So if you take this
article. So this is to be read with the heading. Supreme Court to hear Bombay lawyers' body plea for action against VP Rijiju over remarks on judiciary. Rijiju had said the collegium system of appointing judges was opaque and not transparent. The Supreme Court is scheduled to hear on Monday a plea of the Bombay Lawyers Association against Union Law Minister Kiran Rijiju and Vice President Jagdeep Dhankar over their remarks on the judiciary and collegium system for appointment of judges. The lawyers' body has moved the Supreme Court to challenge the Bombay High Court's February 9 order dismissing its plea on the ground that it was not a fit case to invoke the writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution. As per the Supreme Court website, the appeal of the BLA is listed for hearing before a bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul and Ashuddin Amanullah. The Bombay Lawyers Association had claimed that Rijiju and Dhankar showed lack of faith in the Constitution with their remarks and conduct. It had sought orders to restrain Dhankar from discharging duty as a Vice President and Rijiju as Cabinet Minister for the central government. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन आप नोट कर सकते हैं, जैसे देयर इज अ वर्ड, इट्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट. दिस इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज सिंपली गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट. जबकि अगर हम इसका वर्ब देखें तो दैट विल बी गवर्न. Its noun is government and its verb will be govern. ठीक है, तो ये differences आपको पता चलेंगे. How do you say this one? These words you can bring from newspaper, like you can highlight, and the more you listen to others, जितना ज़्यादा आप दूसरों को सुनेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन उतना ही अच्छा है. क्लियर? तो ऐसे वर्ड्स आप नोट करें जिनमें आपको प्रोनाउंसिएशन का और अच्छा फील है. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वन? इट इज डेवलप. कम ऑन से डी वे ला. डेवलप, डेवलपिंग, डेवलपिंग. India is a developing country. Very soon, it will be a developed country. It will be a developed country. How do you pronounce this word? Accumulation. अब जो जल्दी से प्रोनाउंस करते हैं वो हो सकता है जल्दी बोल जाए accumulation, accumulation. Communication और communication. 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 Association. Association. Communication. Association. Government has its own parameters to develop many things of infrastructure. To take a developing country into a developed stage. This requires accumulation of resources, strong communication. Communication अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं. Communication. Communication. मैंने एक लाइन बोली थी यहाँ पे, हैव प्रॉपर माउथ ओपनिंग. वो यही है. अगर आपका माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है तो वर्ड्स फाइट हुए निकलेंगे.
जैसे आपका वॉइस क्लैरिटी उतना नहीं था, सोचो क्यों, कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है आप तेज कम बोल रहे हो, लाउड कम बोल रहे हो सकता है माउथ ओपनिंग आपका प्रॉपर ना हो। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से अपना लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है। बाकी आपको पता है पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलो। टू एनहांस वोकैबुलरी, टू गेट द स्टैंडर्डाइजेशन and reading stamina, ability to comprehend. Ability to comprehend का मतलब है कि हम उसको समराइज भी कर सकें, what is overall given in the passage. So ऐसे ये सिलसिला आपका जारी रहेगा और ऐसे वर्ड्स आपको मिलते ही रहेंगे। How do you pronounce this word? अब कितने बच्चे कह रहे हैं सोशल? That's wrong. Social. Come on, say social. Social. How do you pronounce this word? जनरली लोग फेशियल कहते हैं कि उसने लास्ट मंथ फेशियल कराया था, अभी इस बार फिर कराएगा। इट इज फेशियल। I am going to join a party. I should have my facial done. I have some social meetings. I am in association with many parties. And I have to develop my strong communication. I need accumulation of all the resources. Tongue twisting. It's very, very important. Betty bought a bit of butter. But the bit of butter was bitter. You कराया था? So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Bitter butter better. Now who can read it in one go? Yeah. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter, so Betty bought another bit of butter to make the bitter butter better. Come on, see, tongue twisting is very important. So what I learned, bit was not there. So I learned. I have added some more words. Yes, sir. So what I learned was Betty bought a butter, but the butter was bitter, so Betty bought a bit of butter to make the bitter butter better. I have made it in friendly manner so that one can have proper sentence formation also, right? Okay. One very $1 million advice. $1 million advice is always speak, read in formal manner. Never read or speak in laughing manner. Laugh while speaking, but don't laugh at your language. Because today if you laugh at your language, tomorrow it will laugh at you. So take it seriously. Language sets ease of communication. It's important for us. Your proficiency is just based on your way of conceiving it, how you take it. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter.
So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Let's be fast. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Bitter butter better. Bitter butter better. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Bitter butter better. Tongue twisting brings easiness in your speaking. Whenever you are free, have art of accumulating words in a scenario. Let's practice. For example, I have these many words and I want to practice my accent. What can I do? I can simply frame a sentence wherein I will involve all these words as per my imagination. Our government is very particular about the unemployment in our country. Our government is thinking to implement many parameters of jobs, employment, skill development, and many more things. Students are developing their personality. They are also developing their skills. This skill development will bring accumulation of many advantageous factors. This will also strengthen their communication skills and their association with others will be strengthened. Their social aspects and their comfort level will be clearly seen through their facial expressions. That's how we develop strong communication skills. While reading a newspaper, keep these facts in your mind. Lessons in a loss on the 2023 Karnataka Assembly election result. The Congress can learn more from the Bharatiya Janata Party's loss than from its win. The mandate for the Congress in Karnataka is as definitive as it could have been. एक साथ पढ़ेंगे. The mandate for the Congress in Karnataka is as definitive as it could have been. अब देखिए वो बच्चा पीछे हो जा रहा है जिसका हैबिट इतना लंबा सेंटेंस लेने का नहीं है, जिसका हैबिट दो वर्ड पढ़ने का है वो पीछे हो जा रहा है. कितने बच्चे ऐसे? तो यही हमें ध्यान देना है कि जहां तक सेमी कॉलन है वहां तक हमें सांस अपनी बना के रखनी है. ब्रीदिंग सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. एक साथ बोलिए. The mandate for the Congress in Karnataka is as definitive as it could have been. An absolute majority with 135 seats in the 224 member assembly garnering support from across regions and demographic groups. No doubt, some of the vote share accrued to it
negatively as a principal party that was in opposition to the Bharatiya Janata Party. This also became clear in the erosion. अब जैसे इसे कुछ बच्चे erosion पढ़ेंगे. This is not erosion, this is erosion. Erosion. Pleasure. Measure. This is pleasure. Erosion. Decision. Measure. Treasure. Treasure. तो यहाँ पे एक अलग सा शब्द आ रहा है जिसका प्रोनाउंसिएशन ज नहीं है, जहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन प्लेजर. इट्स माय प्लेजर. देयर हैज बीन नो इरोजन. योर डिसीजन. डिसीजन. डिसीजन नहीं है, डिसीजन. Decision is the measurement. Your decision has measurement of all the parameters. This treasure report has measurement of all those decisions which were taken at the time of erosion. It's my pleasure to present it. So you can see when you bring these words in a sentence, you get complete sentence and you are able to practice your pronunciation and accent also. So have a great day ahead, practice well, have a paragraph from newspaper today and share your experiences, right? Alright then.